welcome back to our channel. I am Anisha, your maths faculty of class 12th. We are doing chapter number 5 of your NCERT book, that is continuity and differentiability. And in this video, we will do question number 12, 13, 14 and 15 of your exercise 5.3, as you can see in your title also. So let's begin. ओके तो हम इस एक्सरसाइज में कर क्या रहे हैं हम dy by dx निकाल रहे हैं we are finding dy by dx of your explicit function given explicit functions. Okay, so let's begin with question number 12 of this exercise. Okay, here our y is defined as sine inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square, where x is in the range of 0 and 1. Okay, so let's do this question. As you can see, first of all, observe your argument. Suppose I have already told you in the previous videos also, because inverse trigonometric functions are started from the question number 10 and मैं वो जो पुरानी वीडियोस में भी आ चुका है, लेकिन उसमें भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमें आर्ग्यूमेंट को कैसे सोचना चाहिए so that अपना you know अपनी ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए, so it will be very easy for us to differentiate it. But if you are new to this videos, I will explain in this again. So what we do is, what is the basic logic behind it to make your answer more easier and simpler? What we do is, हम आर्ग्यूमेंट में कुछ ऐसा करेंगे कि हमारा वो साइन आ जाए, सो दैट साइन इनवर्स एंड साइन कैंसल आउट हो जाए. दैट्स द बेसिक लॉजिक. उसके लिए हमें कुछ अपने अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं. उसके लिए हमें अपने आर्ग्यूमेंट को प्रॉपर्ली फोकस करके देखना पड़ता है कि हम क्या कोई इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगा सकते हैं. मोस्ट प्रोबेबली what is there in this type of questions is like these are most frequent questions asked in boards also, if I say. And what is the main logic? You have to just like see what trigonometric formula you can think in your argument. That's the only thing you needed. Okay, so as you can see in your argument, this is your argument. So in your argument you have 1 minus of x square upon 1 plus x square. If you to like simplify this inverse trigonometric function, so what you do is, you know, our cos 2 theta formula. Our cos 2 theta is nothing but 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. This thing and this things are looking same, right? Not same, but similar. They are looking similar. But only need is, instead of x, you should have tan theta. So let's do that. So what you do is, take your x as tan theta. Okay. So now in argument, what you get? So your y will become sine inverse of 1 minus of tan square theta upon 1 plus of tan square theta. So this will be nothing but sine inverse of cos 2 theta. Now, as you can see, here you get in the argument cos 2 theta. But if I get something sine, then it will be more easier because sine inverse and sine will cancel out. So for that, what we can do is convert your cos in terms of sine. How can we do that? There is this, all things are nothing, just you have to use your trigonometric functions. So what is we know that our sine pi by 2 minus theta is nothing but cos theta. So we just use this formula here, like this thing, to convert our cos 2 theta in terms of sine. Okay, so what we do is, our sine 2 theta can be written as sine of pi by 2 minus 2 theta. So what we get? This will be sine inverse and sine will cancel out. So what you get? Your y is nothing but pi by 2 minus 2 theta. Okay, but now you see, this theta is new variable. We want dy by dx. So like we have to differentiate with respect to x, but there is theta. So if I like, you can use your chain rule also, no issue in that. But if you can just convert your theta in terms of in terms of x, in the variable of x, then it will be like quite easy. So that you can easily do, because what we have, suppose we have taken our x as tan theta. So by this, our theta is nothing but tan inverse of x. This is our theta. Okay, use this. So what we get is, so from here, our y will become, y is pi by 2 minus 2 times of
tan inverse of x. Now it's very easy to differentiate. You can see your like whole thing become like whole now. Now what you have to do, you have to just differentiate both side with respect to x only. अब तुम्हें दोनों साइड बस x से डिफरेंशिएट ही करना है ना. अब देखो तुम, ये कांस्टेंट हो गया, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हमें इजीली पता है, तो ये डिफरेंशिएशन तो बहुत इजी हो गया एज कम्पेयर टू प्रीवियस वाला. सोचो अगर तुम ये करते तो तुम चेन रूल लगा साइन इनवर्स का करते, फिर साइन इनवर्स के बाद अंदर का ब्रैकेट के लिए चेन रूल लगाते, तो वो यू कैन गेट योर आंसर हियर ऑल्सो. बट ये थोड़ा लेंदी वर्क हो जाता और ये थोड़ा स्मार्ट वर्क हो गया. इसीलिए हम क्या करते हैं, वेन एवर यू हैव अ लाइक साइन इनवर्स सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हम कुछ ऐसा ट्राई करते हैं कि हमारा एक्स को हम लाइक ऐसी फॉर्मूला ढूंढ लें कि हमारा एक्स को हम कुछ सब्स्टिट्यूट करें तो सिंप्लीफाई हो जाए. हम बस हमें वही करना है और कुछ नहीं है. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. So what we have, our y is now differentiate pi by 2 minus, this is pi by 2 minus tan inverse of x, right? So differentiate both sides with respect to x. So what we get, our dy by dx, constant differentiation is 0, tan inverse differentiation, this is 2, right? Because that was 2 theta, yeah. So this is 2. So this is 2 times of differentiation of tan inverse of x, which is nothing but 1 upon 1 plus x square. So what you get? Your dy by dx is nothing but minus 2 by 1 plus x square. Now we get our dy by dx. That's what we have to find. Okay. So we are done with our question number 12. Let's move to next question. चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं. Question number 30 of your exercise 5.3. So as you can see, इधर हमारा y कैसे डिफाइन किया हुआ है, y is defined as cos inverse of 2x upon 1 plus x square. So I have already told you what is the motive, like whenever you have this inverse trigonometric function, तो हमें क्या होता है, कुछ नहीं, हमारे आर्ग्यूमेंट को सिंप्लीफाई करना होता है. अगर हमारे आर्ग्यूमेंट में हम कुछ डायरेक्टली मतलब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोल रही हूँ, अगर आर्ग्यूमेंट में कुछ तिगड़म लगा के मैं कॉस ले आऊं, मेरा काम इजी हो गया. अगर वो डायरेक्टली मैं कॉस नहीं ला पा रही हूँ, सपोज मैं डायरेक्टली कॉस नहीं ला पा रही हूँ, तो हम क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं कि कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए फिर उसको मैं कॉस में इजीली कन्वर्ट कर सकूं. बस इतना ही तो करना होता है और कुछ भी तो ज्यादा खास काम है नहीं यहाँ पे. लेट्स डू देन. ओके, सो okay, here our y is defined as cos inverse of 2x upon 1 plus x square and our range of x is from minus 1 to 1. Now as you can see this is 2x upon 1 plus x square. क्या हम सोच सकते हैं, suppose what is sin 2 theta, our sin 2 theta, यहाँ पे पता है एक साइड में तुम्हें जो फॉर्मूला दिख रहे हो ना बाजू में लिख लेने की, अगर तुम साइड में थोड़ी सी फॉर्मूला लिख लेते हो तो तुम्हें डायरेक्टली क्लिक होता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए. ओके, सो sin 2 theta, sin 2 theta is nothing but 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. अब तुम देखो ये वाला पार्ट इसका like sin 2 theta, this is looking similar as like this if I replace like substitute my x as tan theta. So let's do. So what you do when what you are doing is जो भी तुम मैथ्स में कर रहे हो ना बस लिखते जाओ साथ के साथ, और कुछ काम नहीं है इसमें मैथ्स में, बस लिखते जाओ तुम्हारी ईच स्टेप्स जो भी तुम्हें कर रहे हो, जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो बस लिखते जाओ तो तुम्हारा काम आसान हो जाता है. तो हम क्या करेंगे, अपने x को we will take our x as tan theta. So what you get, your y will become cos inverse of 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. So this will be cos inverse of, this is formula of sin 2 theta, just replace sin 2 theta here, just put sin 2 theta in place of this because this is nothing but our sin 2 theta. Now what we will do, अब देखो क्या मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, इफ मैं अगर इसको कुछ कॉस में कन्वर्ट कर सकती हूँ तो मेरा तो काम आसान हो गया ना, क्योंकि कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा. सो नाउ द अनदर फॉर्मूला व्हाट वी यूज इज, देखो डेरिवेटिव और इसमें कुछ नहीं है, बस तुम्हें तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए सारी की सारी. सो व्हाट यू डू इज, यू नो दैट अवर सॉरी आई डिड मिस्टेक, दिस इज ओके, अवर कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, देखो हम कॉस को साइन में, साइन को कॉस में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, कोसेक को सेक में, सेक को कोसेक में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. बस पाई बाई 2 माइनस थीटा ही तो चाहिए हमें. सो कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा. जस्ट यूज दिस हियर. सो व्हाट यू गेट हियर इज कॉस इनवर्स ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा
cos of pi by 2 minus 2 theta. So cos and cos, inverse and cos will cancel out. So this will, what you get, your y is nothing but pi by 2 minus 2 theta. Just replace your theta, sorry, not replace, put the value of theta in terms of x. So from here, as you can see, your theta is nothing but tan inverse of x. बिकॉज हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए ना, बिकॉज अगर तुम ऐसे ही कंटिन्यू करोगे तो तुम्हें डी थीटा बाई डी एक्स करना पड़ेगा, दैट इज मीन्स चेन रूल लगाना पड़ेगा. इससे अच्छा तो तुम अपने थीटा थीटा को एक्स के टर्म्स में रख दो. मतलब सेम ही बात हो गई, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट हाँ ये इजी होगा तुम्हारे लिए. सो योर y विल बी your y will be pi by 2 minus 2 times of tan inverse of x. Okay, now just differentiate both side. Differentiate both side. If you differentiate both side, what you get, this will be dy by dx. Constant differentiation is 0. This is minus 2 upon, because tan inverse differentiation is nothing but 1 upon 1 plus x squared. So this is our dy by dx. Okay, यहाँ पे भी अपना dy by dx में निकल गया. Okay, we are done here also. Let's move to the next question. That is question number 14. Okay, so अब तुम देखो, here also you have inverse trigonometric function. Same rule you have to do. क्या तुम्हें आर्ग्यूमेंट में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला दिख रही है, क्या तुम उसको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में कुछ एडजस्ट कर सकते हो? और वो मतलब देखो, जब भी देखो ऐसा कुछ हो, अगर तुम्हें, बिकॉज एज यू आर इन 12th, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास तुम्हारे हाथ पे होने ही चाहिए. बिकॉज अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास पता होंगी तो यू कैन इजीली डू कन्वर्ट योर क्वेश्चन, लाइक यू नो वेरी टफ क्वेश्चन इन सिंपलर फॉर्म. अगर वो एक बार सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तब तो तुम कर लोगे ना उसको. बस सिंपलर फॉर्म में ही कन्वर्ट करने की देर होती है, फिर तो सबको सब दिख जाता है. बस वो सिंपलर फॉर्म में ही कन्वर्ट करने के लिए अगर तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का यूज है तो लगा दो भाई, जितनी ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो लगा लो. ओके, सो let's do here also. I will not do whole question here. I will give you hint. Then you guys will proceed it. So, okay. So see, your argument is 2x root of 1 minus x square. Okay. क्या हमें यहाँ पे जानी पहचानी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगती हुई दिख रही है? ऐसे डायरेक्ट तो कोई ट्रिग्नोमेट्री मेरे को तो नहीं दिख रही है. चलो ठीक है, कुछ और ट्राई करते हैं. So if I take my x as sin theta, so what you get? So this will be 2 sin theta upon 1 minus of sin square theta. And 1 minus of sin square theta is nothing but cos square theta. So this will be 2 sin theta. 2 sin theta. Here what we have taken, take your x as this, 2 sin theta cos theta. Because why? Because our sin square theta plus cos square theta is nothing but 1. So what you get? This is nothing but sin 2 theta. अब तो काम हो गया ना. अगर मैं इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, होल प्रोसेस इज डन. बस तुम्हें बस चीजें अब डर नहीं है, मैंने तो तुम्हें सामान बना के दे दिया है तुम्हें पूरा. बस तो अब तो तुम्हें क्या करना है, सामान तो बना दिया, अब यार इतना तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा. ठीक है, और क्या मैं कुछ और हिंट दे सकती हूँ? हाँ, ओके. सो लेट मी टेल यू क्यों मैंने ये डायरेक्टली ऐसे ही सोचा. देखो, whenever you are getting like 1 minus x square or yeah, sorry, 1 minus x square or 1 plus x square, you always use your formula, trigonometric formulas, kind of what kind of trigonometric you should think for that. What is cos square theta plus sin square theta equals to 1? Sorry, sin square theta equals to 1. ये अगर if you have 1 minus of x square somewhere and if you have suppose 1 plus x square, क्या सोच सकते हो? या अपना tan square theta plus 1 is nothing but sec square theta. मतलब ये दिख जाना चाहिए. क्या तुम ये कुछ करो तो तुम्हारा सिंप्लीफाई हो जाए, ये दिखना चाहिए. बिकॉज अगर x को 10 लोगे ना तो तुम्हारा ये 1 plus x square theta सिंपली डायरेक्टली tan square theta में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब whenever you have 1 minus x square, try with this. If you have 1 plus x square, try with this. बस ट्राई करो, मतलब क्या पता कुछ सिंप्लीफाई हो जाए.
वही तो मैं बोल रही हूँ, देखो वही चीज सेम रिपीट कर रही हूँ। जब भी तुम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ यूज कर रहे हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, अगर तुम्हें दिख रहा है कि मैं कोई फॉर्मूला लगा सकता हूँ, कोई एडजस्ट करके कोई फॉर्मूला बना सकता हूँ, तो वो बनाओ। बिकॉज इफ यू डू दैट, योर लाइक वर्क विल बिकम easy. Once your work will become easy, then you can easily solve your like question like completely. Okay, so I don't think I have need to do whole the question, because I have like just give you whole the idea what you have to think. Now just do what we always do, substitute your x and then find your dy by dx. Nothing else in that. Okay, now let's last question of this video, that is okay. So question number 15. So in question number 15, what we have, our y is sec inverse of 1 upon 2x square minus 1, where x is in the range of 0 to 1 by root 2. Okay, so first of all, we always read your question like clearly. So in your argument, what you have, 1 upon 2x square minus 1. To simplify a trigonometric function, can you think what should you substitute your x? अभी तक तो तुम्हें आइडिया कर आ ही गया होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में मोस्टली हमारा यही होता है कि हमें बस कुछ अपना x सब्स्टिट्यूट करना है, जिससे हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है ये। तो वो हम कैसे सोच सकते हैं? ओके, तो दिस इज 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। ओके, क्या ये किसी पे जानी पहचानी लग रही है? देखो, व्हाट इज cos 2 थीटा? हाँ, cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्म है ना। सो वन एक फॉर्म ये भी तो है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये मेरे को तो वैसे ही दिख रही है कि 2 cos स्क्वायर माइनस थीटा 1, बस मैं x को अगर cos थीटा रख दूं तो। सो व्हाट यू डू इज टेक योर x एज cos theta. So what we will get, that our y will become sec inverse of 1 upon 2 cos square theta minus 1. So this will be sec inverse of 1 upon, just use this formula. So this will be cos 2 theta, and this will be nothing but sec inverse of sec of 2 theta. Sec and sec cancel out. So now it's easy. So your y will become 2 theta. Now put the value of theta here. So this is 2 times of cos inverse of x. Now differentiate both sides with respect to x. So by this, what you do is differentiate both sides with respect to x. So what we get is dy by dx will be 2 times of, and because cos inverse of x derivative is nothing but minus of 1 upon root 1 minus of x square. So this is our dy by dx. Okay, done. Okay, so our exercise 5.3 is completed. Now in exercise 5.3, if I have to say कि like क्या तुम्हें ज्यादा फोकस देना चाहिए एक्सरसाइज में, बिकॉज ये एक्सरसाइज थोड़ी सी मैं बोल सकती हूँ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है थोड़ी, बिकॉज इसमें ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक तो इंट्रोड्यूस हो गए हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज होना स्टार्ट हो गया है, जो कि थोड़ा सा लाइक पेपर पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को उस पर थोड़ा फोकस देना चाहिए। एंड please keep practicing of the questions which involves inverse trigonometric functions, because in that functions, if you like keep doing these questions, then you will be familiar to the questions and you can easily judge how to solve these questions. Because see, there is always an easy method. If you like if I try to say for this question, if you just differentiate both sides with respect to x, you can easily simply do by that way also, because then you have to use your chain rule, you have to use the derivative of sec inverse that you know, because they are the standard derivatives that you know already, but it will take some time, because it's like by using that chain rule your argument is quite दिखने में अच्छा नहीं है। अगर तुम उसको डिफरेंशिएट करोगे ना, थोड़ा लंबा लंबा जाता जाएगा तुम्हारा, थोड़ा कैलकुलेशंस ज्यादा हो जाएंगी, सॉल्विंग्स ज्यादा हो जाएंगी। सो इसीलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का में हमेशा एक ही चीज रूल होता है, तुम्हें बस अपना एक्स को अच्छे से सब्स्टिट्यूट करना है, और उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें जस्ट तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला देखनी है। और भाई तुम 12th में हो यार, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास तुम्हारे हाथ में होंगे, और अगर तुम्हें वो देखी देखी लग रही, बस भाई एक्स की जगह पे तुम देखो क्या रखोगे तो कि तुम्हें वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लग जाए, वो तो फिर देखनी बहुत ईजी हो जाती है। दिस व्हाट यू हैव टू थिंक, व्हाट शुड योर एक्स, देन यू आर डन। और ऑलवेज मोस्टली क्या होता है ना, बस
your like argument will become somehow that either it for this case suppose I am trying to say, या तो तुम्हारे इसमें ऐसा होगा कि तुम्हारा आर्ग्यूमेंट में ही सेक आ जाए, जैसे कि इसमें डायरेक्टली है, इफ यू आर नॉट गेटिंग योर सेक डायरेक्टली, what you get some functions in trigonometry that can easily convert it to your sec, so that second verse will cancel out. This is the main motto. Okay, this is the like not motto, this is the main way how to do the question, how should be its solution. उसका सॉल्यूशन दिखना कैसा चाहिए, ऐसा ही होता है, कुछ ज्यादा खास नहीं होता है, कैसे भी करके सेकंड वर्स के लिए अंदर सेक आएगा, बस अब तुम्हें वो अंदर सेक निकालना है, उसके लिए भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तुम्हें बस अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास को शार्पन करना है। अगर तुम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास तुम्हें हाथ में होंगे तो तुम इजीली कर पाओगे ये। Okay, so I think that's all for today's video. We have completed our exercise 5.3. Please keep practicing these questions. If you have doubt, if you have any doubt, ask me in the comment section. I will solve your doubts as soon as possible in the comment section itself. और जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की बाइलिंगुअल लैंग्वेज बोलने के लिए, अगर आपके मन में कोई और भी है कि हाँ हमें ये चीज ट्राई करनी चाहिए, मैम आपको ऐसा पढ़ाना चाहिए, या फिर मैम आपको थोड़ी ये चीज ट्राई करनी चाहिए, थोड़ा इसमें लैग हो रहा है, आप ये बताइए, तो मैं वो करने की पूरी ट्राई करूंगी। इफ वो मेरे को रीजनेबल लगेगा कि हाँ ये आप लोग सही बोल रहे हो, हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, तो आई विल डू दैट। एंड till next video, we will see, sorry, we will see, not we will see. Till next video, please keep practicing and keep watching all the videos. If you have doubts, I'm not forcing, just keep watching if you have any doubts, and please like, share and subscribe these videos. Thank you.